How can someone be so accurate? Is this only me, or like everyone can predict this movements of a chart, especially a Bitcoin chart? See, I'm not sure about any other chart in this world, but I studied Bitcoin chart each and every single day. So that is the proof which I always give to all of you. So कल मैं बात कर रहा था Bitcoin will fall from this part and the neckline is this. And exactly Bitcoin is holding that particular area. This entire part, we call it the neckline. If this is a top one and top two. So double top, this is the neckline around 19,100 se leke somewhere around 19,227. Let's take something in between 19,100 se 19,300 tak. This is the neckline I have mentioned in my last video. So now, according to this Bitcoin chart and the movement, so as discussed, अगर इधर से कोई अभी तक ओपन कर लिया है, मतलब when Bitcoin का price it was around this part 19,600 से लेके 19,500 तक, ये वाला पोजीशन में अगर कोई ओपन कर लिया है, then the guy must be sitting on around 20% or 25% gain with a 10x leverage. So now, what is the next step and what is the possibility? So hey guys, this is Dave. Welcome back to BitBull. Hope you all are doing well and good. So before I go forward, let's smash into the like button to a new all-time high because of this everyday accurate prediction on chart. And also be a part of our Twitter and Telegram handle, जिसका link video description पे मिल जाएगा. So let's get forward. So आज का एक world famous news है. The world must know about this news, which is Bitcoin has just registered its name into Guinness Book of World Record. 2022 का Guinness Book of World Record पे you will get the name of Bitcoin Satoshi Nakamoto, the founder, the programmer, the developer of the Bitcoin. So world is moving, time is changing. Regulated हो या फिर unregulated हो, Bitcoin has just made its name to the world's Guinness Book of World Record. Now let's talk about what is the possibilities in next few weeks. So it's been last 126 days when Bitcoin is ranging between $18,000 to $25,000. $18,000 to $25,000 के बीच में एकदम sideways movement. Since it has been 126 days, मतलब 4 महीने के ऊपर. That is why investors and analysts they are predicting कि Bitcoin एक huge spike के लिए ready है, जिसका prime reason है जो glass node का volatility. Bitcoin 1 week realized volatility zone है which has been lowest since last 3 to 4 years. So according to Glassnode, Bitcoin का जो 1 week realized volatility range है, this has been the lowest since last 2 to 3 years. So ये वाला chart अगर देखा जाए, so let's talk about what is the recent percentage, which is the 28%, the volatility range. And ये volatility range 28% का मतलब क्या है, या फिर 100% या फिर 200% का मतलब क्या है, that I'm going to explain just right after this data. So right now the realized volatility is 28%. इससे पहले ये वाला रेंज पे जब था Bitcoin, it was back in 2020 का Jan and 2020 का December, before Bitcoin का जो major rally था from 4k 5k डॉलर से स्टार्ट होके जो $64,000 तक Bitcoin स्पाइक किया था, उससे पहले Bitcoin का रेंज, Bitcoin का volatility रेंज, it was below 28%. बट ऐसे देखा जाए तो उस टाइम रेंज और ज्यादा नीचे था, मतलब इट वाज बिलो 10%. तो 28% को हम लोग एक्सट्रीम नहीं मान सकते, इससे नीचे भी आ सकता है वोलाटिलिटी रेंज. इसका मतलब ये डेटा भी एकदम हार्ड एंड कॉन्क्रीट नहीं है कि चलो ये 28% है मतलब बिटकॉइन के लिए प्लस पॉइंट है. ये 10% भी आ सकता है, ये 5% भी आ सकता है, बट 28% इज better than printed any number has printed in last 2 years. So now realized volatility rate 28% का मतलब है कि बिटकॉइन का जो बेयर्स है, मतलब बेयर्स मतलब जो बिटकॉइन सेल करता है, वो सेल करने वालों का जो बेयर्स का नंबर ऑफ बेयर्स है, they are completely squeezed out. They are completely dry hanging.
उन लोगों के पास कुछ सेल करने का है ही नहीं. That is why Bitcoin का प्राइस लास्ट 127 days, it has been last 126 days, Bitcoin का प्राइस ranging between $18,000 to $25,000. Now, the second point is moving average, 7 days moving average. Now check this 7 days moving average. Bitcoin का प्राइस since 22 का जनवरी से लेके आज अक्टूबर, ऑलमोस्ट इज अबाउट टू एंड अक्टूबर. इट्स 19th of October. It's been 10 months. Bitcoin का प्राइस has been declining. And here in moving average, Bitcoin का प्राइस is on a upward moving channel. जहां पे प्राइस नीचे आ रहा है and moving average ऊपर जा रहा है. That is the divergence. That is the technical divergence we follow as a technical analyst. So that is the second proof that Bitcoin is in a better state. Now one of the major metrics, cash flow, मतलब cash inflow in Bitcoin's network. So since May 2022 जो कैश फ्लो है, जो फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट है, मतलब फ्यूचर का जो कैश फ्लो है, that has been tripled in value, मतलब 80% above since the beginning of Bitcoin's existence. So ऐसे देखा जा रहा है कि 22 से जनवरी, let's say जनवरी 22 से still now अक्टूबर 19 तक Bitcoin का जो कैश इनफ्लो है, which has been triple in value, 80% ज्यादा कैश फ्लो है Bitcoin का नेटवर्क पे. Now the catch over here, which is ये फ्यूचर एक्सचेंजेस पे है. So फ्यूचर एक्सचेंजेस पे, फ्यूचर पे हम लोग सेल भी करते, बाय भी करते. So that is the confusion here. Last 10 months 2022 स्टार्टिंग से बिटकॉइन नेटवर्क पे कैश फ्लो है, मतलब सिंस बिटकॉइंस एग्जिस्टेंस सबसे ज्यादा कैश फ्लो ये वाला ईयर पे ही हुआ है. बट देयर इज नो क्लियर इंडिकेशन कि ये वाला कैश फ्लो, ये फ्यूचर एक्सचेंजेस पे जो कैश फ्लो है, ये कैश फ्लो बाय के लिए है या फिर सेल के लिए है. सो कुछ भी है, इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स आर मेकिंग देयर मनी. अगर बिटकॉइन नीचे जा रहा है देन यू सेल इट and make money. ऊपर जा रहा है, you buy it and make money. That is the plus point of the future. That is the plus point of future account. So ये कुछ भी हो सकता है. But it is a positive point कि Bitcoin पे cash flow has been huge since Bitcoin's existence. Now one last data I would like to show कि ये वाला डेटा शो करने का ये मतलब है कि बिटकॉइन का प्राइस रेंज जो 18,000 से 25,000 के बीच में है. सो इन्वेस्टर्स का जो सेंटिमेंट है वो कौन से प्राइस में कैसे काम करता है. Just look at this data between 18,000 to 19,000. Zero calls. Let me tell you, calls मतलब buy, put मतलब sell. तो बिटकॉइन का प्राइस जब $18,000 से लेके $19,000 पे, there is no one to buy. Everyone in this range, 18,000 to 19,000 के बीच में, everyone is interested in selling. 4,300 puts just above 19,000 to 20,000. 19,000 to 20,000 पे it's almost even. 1,500 calls मतलब 1,500 buy and 1,100 sell. Almost even when Bitcoin का price is between 19,000 to 20,000. Now the positive zone, Bitcoin का price when it's above 20,000 to 21,000 पे 4,300 call. 4,300 traders would like to buy rather than 100, just 100 sell. And when Bitcoin ka price is above 21,000 and 22,000, then there is no one to sell. It's everyone 7,200 buy. So sentiments will just change जैसे ही Bitcoin का प्राइस 20,000 के ऊपर सपोर्ट लेना स्टार्ट करेगा, इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट इमीडिएटली चेंज होना स्टार्ट होगा. So now as we can see, Bitcoin का प्राइस since last 18 सितंबर से लेके till now, Bitcoin का जो मूवमेंट है वो $20,000 का जो रेजिस्टेंस लाइन है वो अभी तक क्रॉस नहीं कर पाया है. यही एक स्टिकिंग पॉइंट है. बिटकॉइन का प्राइस जैसे ही $20,000 क्रॉस करता है, देन द सेंटिमेंट विल टर्न बुलिश. एंड जो बिटकॉइन का हालत है सिंस लास्ट 1 मंथ, सितंबर टू अक्टूबर, इट हैज बीन 17 सितंबर से लेकर आज 19th of October, ऑलमोस्ट 1 month and 2 days बिटकॉइन का प्राइस $20,000 का जो रेजिस्टेंस लाइन है वो अभी तक क्रॉस नहीं कर पाया है.
So that is the reason Bitcoin is not able to move upward or not able to touch $25,000. इधर और एक माइनस पॉइंट भी है. So recently Bitcoin लास्ट 2 से 3 महीने पे $18,000 के आसपास का जितना भी सपोर्ट लाइन है उसको बार बार टच कर चुका है. एंड वी ऑल नो जितना ज्यादा टच पॉइंट्स उतना ही वीक सपोर्ट, मतलब जितना ज्यादा ये वाला लाइन पे टच होगा उतना ज्यादा बाई ऑर्डर इधर से एग्जॉस्ट होके बिटकॉइन ऊपर जाएगा. लेकिन कितना बुल्स है, कितना टाइम लोग बाई करेगा. So that what makes it minus point. That's what makes it fragile. सपोर्ट में जितना बार आप टच करोगे उतना ही ज्यादा सपोर्ट ढीला होते जाएगा. एज सेम एज रेजिस्टेंस पे आप जितना ज्यादा हिट करोगे रेजिस्टेंस पे उतना ही ज्यादा ढीला होते जाएगा. सो नाउ इट इज द टाइम टू एक्चुअली गेट टू अ कंक्लूजन कि सपोर्ट ढीला हो रहा है या फिर रेजिस्टेंस ढीला हो रहा है. सपोर्ट ढीला होगा तो बिटकॉइन नीचे आएगा, रेजिस्टेंस ढीला होगा तो बिटकॉइन ऊपर जाएगा. So let's see. I'm not putting any thoughts on today's market. I would like to wait for next 12 to 24 hours. After that, we will see which direction Bitcoin could possibly move or Bitcoin has already started moving. So that's it from my side, guys. Thank you for watching. Thank you for listening. Enjoy this video. Dave signing off.